students, I welcome all my dear students in the online lecture. Students, I hope all of you have written your exam best. Yes or no, students? So after completing your unit test exam, from today onwards, we are going to move to our next unit. So, let us start learning subject English of Standard First. Our today's poem is Bow Wow. In Unit 3, students, we have completed Unit 1 and Unit 2. Now, in this lecture, we are going to start from Unit 3. Poem number 1, Bow Wow. Students, as you all know, by hearing the name Bow Wow, what can you imagine? Yes, Bow Wow is the sound of animals. Correct. So, in our today's poem, we are going to learn several sounds of the animals. So, students, this poem is very interesting for y'all as we will learn many sounds of different animals. So, are you all ready? Students, I request you all to open your English Bal Bharti textbook, Unit 3, Poem number 1, Bow Wow. And also, students, I would like to tell you one thing that a combined book number 1 is completed, is done. So now, you have to remove your combined book number 2. From today onwards, you have to remove your combined book number 2. Let us see the image of combined book number 2. This is your Navjeevan term book, that is combined book number 2 of Standard First. This is pink in color. बच्चों, आज से आपको जैसे पता है हमारा कंबाइन बुक नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम में, तो आज से हम नवजीवन कंबाइन बुक नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो आज से आपको कंबाइन बुक नंबर 2 आपके इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सारे सब्जेक्ट्स में आपको कंबाइन बुक नंबर 2 का यूज़ करना है। कंबाइन बुक नंबर 2 का फ्रंट कवर पिंक कलर का है, आप देख सकते हो आपके वीडियो में, मोबाइल स्क्रीन पे मैंने आपको अभी दिखाया है। ये पिंक कलर का है कंबाइंड बुक नंबर 2। तो आज से हम इस बुक में नोट्स रिफ़र करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू बी रेडी विथ योर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक of Standard First. As in today's online lecture, we are going to study Unit 3 in English, Poem number 1, Bow Wow. Let us have a look to our index page of the book. Students, we have completed Unit 1, Unit 2. Now, in this, we are going to learn Unit 3. From today, we are going to start Unit 3, Poem number 1, Bow Wow. Students, open your page number 23 of your English Bal Bharti textbook. बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पोएम नंबर 1 भाव वाव यूनिट 3 ओपन करना है। आज हम हमारी फर्स्ट पोएम यूनिट 3 में भाव वाव पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स,
This poem is very, very interesting. So, do watch this lecture till the end, as you are going to learn the sounds of many animals. बच्चों, आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा. आज के इस पोयम में हम साउंड्स पढ़ने जाएंगे, आवाज़ें अलग अलग एनिमल्स की. तो इस पोयम में हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन सी आवाज़ें हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस poem Bow Wow, we are going to learn different sounds of animals. Are you all ready? Okay, students, I am going to read for you all. You have to pay attention in your textbook. Those who are not having the textbook, they will look at their mobile screen. Bow wow. Listen, repeat and sing. Bow wow, says the dog. Students, how does the dog say? Dog say bow wow. बच्चों, डॉग की आवाज़ कैसी है? डॉग किस तरह से बोलता है? भाव वाव. Yes. Students, who is he? He is a dog. What is the sound of the dog? Bow wow, says the dog. बच्चों, आप भी आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो और मोबाइल स्क्रीन में, और आपको भी आवाज़ डॉग की निकालनी है. डॉग का साउंड कैसा है? हाउ डज द डॉग से, स्टूडेंट्स? यस, डॉग सेज भाव वाव. Meow meow, says the cat. Now next, second is the sound of the cat. How does the cat says? Meow meow, says the cat. Students, everyone know cat, yes or no? बच्चों, आपको पता है कैट कैसे आवाज़ निकालती है? कैट का साउंड कैसे है? म्याओ म्याओ, सेज द कैट. तो बच्चों, कैट का साउंड है म्याओ म्याओ. म्याओ म्याओ, सेज द कैट. आपको पिक्चर दिख रही है कैट की, और उसका साउंड है म्याओ म्याओ. नेक्स्ट इज ग्रंट ग्रंट, सेज द हॉग. बच्चों, थर्ड साउंड है ग्रंट ग्रंट, सेज द हॉग. Students, what do you mean by hog? Hog means pig. बच्चों, hog का मतलब होता है pig. आपने pig देखा है, yes or no? उसका आवाज़ है grunt grunt, says the hog. The sound of a hog is grunt grunt. Hog is the pig. This is the picture of a pig. The sound is grunt grunt, says the hog. This is a hog. Hog means pig and the sound is grunt grunt. बच्चों, hog का मतलब है pig. आप देख सकते हो इस पिक्चर में, hog means pig and the sound is grunt grunt. And squeak goes the rat. Students, rat. बच्चों, आप rat को जानते हो. rat means चूहा. What is the sound of a rat? Squeak. Squeak goes the rat. Squeak. How does the rat do? Squeak. The sound of the rat is squeak squeak. बच्चों, rat का साउंड यानी चूहे का साउंड कैसा है? स्क्वीक स्क्वीक स्क्वीक. टू हू सेज द आउल. द नेक्स्ट एनिमल इज आउल. व्हाट इज द साउंड ऑफ द आउल? टू हू सेज द आउल.
Owl says too-hoo. Too-hoo says the owl. The sound of the owl is too-hoo. बच्चों, owl यानी कि उल्लू. आउल का आवाज़ कैसा है? टू-हू. आउल का साउंड है टू-हू सेज द आउल. आउल टू-हू बोलता है. काव काव सेज द क्रो. क्रो, students, you all know crow, yes or no? Everyone knows the crow. Crow is black in color. Yes, crow is a bird. How does the crow says? Cow cow. बच्चों, crow यानी कौवा. आप जानते हो crow को? उस crow की साउंड है cow cow. Cow cow says the crow. This is the picture of a crow. बच्चों, ये crow है और इसका साउंड है cow cow. Cow cow says the crow. Next is the duck. Quack quack says the duck. The sound of a duck is quack quack. Students, you all know the duck, yes or no? Yes. The sound of a duck is quack quack. बच्चों, डक का साउंड कैसा है? ये पिक्चर है डक की. डक का साउंड है क्वैक क्वैक. यानी डक कैसे बोलते हैं? क्वैक क्वैक. द साउंड ऑफ अ डक इज क्वैक क्वैक सेज द डक. एंड व्हाट cuckoos say? You know? Now students, the last one is the cuckoo. Cuckoo is a bird. Do you know what is the sound of a cuckoo? And what cuckoos say? You know? Now, बच्चों, the last आवाज़ है बर्ड की, कुकू की. क्या आप बता सकते हो कुकू की आवाज़ कैसी है? कौन सा साउंड है कुकू का? And what cuckoos say? You know? Do you know what cuckoos say? Cuckoo. The sound of the cuckoo is cuckoo. Yes, this is the cuckoo and the sound is cuckoo. Very good. The name of the bird is the sound cuckoo. The sound is also the same. As the name of the bird is cuckoo, the sound is also cuckoo. Students, let us sing the poem. बच्चों, अब जैसे कि हमने साउंड्स देखे और समझे हर एक एनिमल्स के साउंड्स. स्टूडेंट्स, as we have learnt the sounds of the animals, now we are going to sing the poem Bow Wow. So students, repeat the poem behind me. Bow wow says the dog. Meow meow says the cat. Grunt grunt says the hog. And squeak goes the rat. Too-hoo says the owl. Cow cow says the crow. Quack quack says the duck. And what cuckoos say? You know? Students, now you will repeat once again behind me. So repeat the words loudly, as you have to recognize the sounds of the animals. बच्चों, और एक बार हम पोएम रीड करेंगे, तो मेरे साथ साथ पोएम रिपीट करो. आपको हर एक एनिमल्स के साउंड्स अच्छे से याद होने चाहिए. स्टूडेंट्स, you have to remember the sounds
of each animal. Bow wow says the dog. Meow meow says the cat. Grunt grunt says the hog. And squeak goes the rat. Too-hoo says the owl. Cow cow says the crow. Quack quack says the duck. And what cuckoos say? You know? So students, here we have completed our poem number 1, Bow Wow, in Unit 3. And we have learned the different sounds of the animals. Let us revise the sounds in a short. Bow wow says the dog. The first sound is dog. The first sound is bow wow says the dog. Meow meow says the cat. The second sound is meow meow of the cat. The third sound is grunt grunt says the hog. The third sound is grunt grunt. And squeak goes the rat. The next sound is squeak, the sound of a rat. Too-hoo says the owl. The next sound is too-hoo says the owl. The sound of the owl is too-hoo. The next sound is cow cow says the crow. The next sound is cow cow of a crow. The next sound is of a duck. Quack quack says the duck. The next sound is quack quack says the duck. The sound of a duck is quack quack. And what cuckoos say? You know? Do you know what cuckoos say? Now, the sound of a cuckoo, do you know? It has been asked in the poem. Do you know, students, what cuckoos say? The cuckoos say cuckoo. The sound of a cuckoo is cuckoo. So here in this poem we have learned the sounds of the animals, the dogs, the cat, the hawk, the rat, the owl, the crow, the duck and the cuckoo. So here we have also studied the sounds of the animals in our today's poem number 1, Bow Wow. I hope, students, this poem was very easy. Only you have to remember the names, the sounds of the animals. Now question number 2, look and say. Question number 2 is look and say. Look and say, here are some words from the poem. You have to look at the words and you have to say the words. Let us look at the words. Look and say. The first word is D-O-G, dog. The first word is D-O-G, dog. The second word is C-A-T, cat. The second word is C-A-T, cat. The third word is C-R-O-W, crow. Third word is crow. Fourth word is hog, H-O-G, hog. The next word is rat,
R-A-T, rat. The last word is know. K-N-O-W, know. Now, students, there is one more thing to observe in question number 2. बच्चों, ये वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने पढ़े, इसमें और एक चीज़ है. देयर इज वन मोर थिंग. कैन यू सी द वर्ड्स opposite dog, hog? Yes, these are also the rhyming words from the poem. बच्चों, ये rhyming words भी है क्योंकि आप देख सकते हो डॉग, हॉग, एक ही साउंड के वर्ड्स को हम कहते हैं rhyming words. So, D-O-G, dog, H-O-G, hog. These are also the rhyming words from the poem. Second, C-A-T, cat, R-A-T, rat, cat, rat. Third, C-R-O-W, crow, N-K-N-O-W, no, crow, no. So, can you hear the sound of the words are similar? So, these words are called as rhyming words. बच्चों, जो वर्ड्स के साउंड सेम रहते हैं, एक जैसे सुनने में रहते हैं, उससे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स. इस पोएम में डॉग, हॉग, कैट, रैट, क्रो, नो, ये 3 पैर दिए गए हैं राइमिंग वर्ड्स के. Now question number 3 is match the animals to their sounds. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है मैचिंग. एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उसके सामने एनिमल्स के साउंड्स दिए गए हैं. एनिमल्स की आवाज़ें आपको मैचिंग करना है. स्टूडेंट्स, you have to match in question number 3. Match the animals to their sounds. So, students, open your pencil, remove your pencil. We are going to match the pairs. In the first column, the names of the animal is given. In the second column, you can see sounds of the animals is given. So we are going to match the animals name to their sounds. बच्चों, आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हो एनिमल्स के नाम दिए गए हैं. सेकंड कॉलम में एनिमल्स के साउंड दिए गए हैं, आवाज़ें. आपको एनिमल के नाम को एनिमल के साउंड में पेंसिल से मैच करना है, यानी जोड़ियाँ मिलाना है. तो आपको आपकी पेंसिल रिमूव करनी है. रिमूव योर पेंसिल स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आई हैव डन द मैचिंग फॉर यू. बच्चों, मैंने आपको मैच करके दिखाया है. आपको भी उसी तरीके से पेंसिल से आपके टेक्स्ट बुक में मैच करना है. फर्स्ट है डॉग. द फर्स्ट वन इज डॉग. द साउंड ऑफ अ डॉग इज भाव वाव. सो मैच द डॉग with the sound bhav wow. Second one is cat. The sound of a cat is meow meow. So you have to match cat cat with the sound meow meow, meow meow, cat meow meow. The third one is hog. The third animal is hog, hog. You have to match the sound is grunt grunt, grunt grunt, grunt grunt. The sound of a hog is grunt grunt. The next is rat rat. The sound of a rat is squeak, squeak, squeak. So match the sound of a rat, squeak.
The next is owl. The sound of owl is to-hoo. O-W-L, owl. Match owl with the sound T-U-W-H-O-O. To-hoo. The sound of owl is to-hoo. Next, crow. C-R-O-W, crow. The sound of a crow is cow, cow. C-A-U, cow. C-A-U, cow. So match crow with the sound cow, cow. The sound of a crow is cow, cow. And the last, duck. D-U-C-K, duck. Match the duck with quack, quack. Q-U-A-C-K, quack. Q-U-A-C-K, quack. Quack, quack. Match the sound quack, quack with the duck. So students, have you all done the matching in your textbook? बच्चों, आपने मैचिंग किए एनिमल्स के नाम को साउंड्स पे मैच करना है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू मैच द एनिमल्स टू देयर साउंड्स. Students, have you all completed on your page number 23 matching? Now we have completed learning our first poem Bhav Wow. We have learned the poem Bhav Wow. So students, you will by heart the poem at your home. Bhav Wow. बच्चों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने भाव वाव इस पोएम को पढ़ी. तो आपको आपके घर पे इस पोएम को रीडिंग प्रैक्टिस करना है बाय हार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 वाज लुक एंड से. द वर्ड्स वर गिवन, यू हैव टू रिपीट एंड प्रैक्टिस द वर्ड्स. एंड क्वेश्चन नंबर 3 वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैच द एनिमल्स टू देयर साउंड्स. Now students, I request all of you to open your combined book as I have shown you. बच्चों, अब आपको आपकी combined book नंबर 2 ओपन करनी है, जिसमें आज हम combined book में पढ़ने वाले हैं. So students, open your combined book number 2. Students, this is your combined book, Navjeevan combined book number 2. This is pink in color. So from today onwards, you will refer your combined book number 2 for this exam. बच्चों, अब आपको combined book 2 का इस्तेमाल करना है. आज से इस यूनिट में हम combined book number 2 पढ़ने वाले हैं. तो आपको आपकी कंबाइंड बुक नंबर 2 पिंक कलर की रहेगी, वो आपको ओपन करना है. स्टूडेंट्स, दोज हु आर नॉट हैविंग द कंबाइंड बुक, दे कैन ओपन देयर इंग्लिश नोटबुक और एल्स रफ नोटबुक. बच्चों, जिसके पास कंबाइंड बुक नहीं है वो आपकी इंग्लिश नोटबुक या रफ नोटबुक ओपन कर सकता है. अदर स्टूडेंट्स, ओपन योर कंबाइंड बुक. ओपन पेज नंबर 1 इन योर कंबाइंड बुक. इन इंग्लिश, ओपन पेज नंबर 1. बच्चों, आपको आपके कंबाइंड बुक नंबर 2 में पेज नंबर 1 ओपन करना है. Poem number 1, Bhav Wow. Students, the poem which we have learned today, now in the combined book you will do the matching. बच्चों, आज हमने हमारे टेक्स्ट बुक से पोएम 1 भाव वाव जो पढ़ी, सेम हम मैचिंग करेंगे हमारे कंबाइंड बुक में. लुक एंड से, हियर आर सम वर्ड्स एज यू कैन सी. O-W-L, owl. C-R-O-W, crow.
Quack, quack. Cuckoo, cuckoo. Know, no. Dog. Meow, meow. Grunt, grunt. Squeak, squeak. These are the words, students. You will practice the dictation words and you will learn the words. And you will also write the words in your English notebook. बच्चों, ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. आपको ये वर्ड्स आपके इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है. Now class work, match the animals to their sounds. In the column A, animal name is given. Column B, sound of the animal is given. बच्चों, सेम चीज़ हमने टेक्स्ट बुक में लर्न की. आपको मैचिंग करना है और आंसर्स आपको नीचे डैश में अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं. स्टूडेंट्स, you have to write the alphabets below in the given space. Dog, dog. Dog, the sound is bhaw wow. Second, cat, the sound is meow meow. Third, hog, the sound is grunt grunt. Fourth, rat, the sound is squeak. Fifth, owl, the sound is hoo. Sixth, crow, the sound is cow cow. Seventh, duck, the sound is quack quack. So students, you will write the sounds, you will match the sound and you will write the alphabet. The first one is alphabet C. Second one is D. Third one is A. Fourth one is F. Fifth one is G. Sixth one is E. And seventh one is B. So you will complete a page number 1 in your combined book. So today we have learnt a poem. We have completed. Thank you students for watching today's online lecture. Thank you once again. Stay connected, stay safe, be at home and stay connected for the next online lecture. Thank you, my dear students.